the Jammu and Kashmir. Prime Minister Narendra Modi is set to inaugurate the highly anticipated Z-Morh Tunnel in Jammu and Kashmir's Sonamarg in the presence of Chief Minister Omar Abdullah and Union Minister Nitin Gadkari and LG Governor Manoj Sinha. The Prime Minister is scheduled to inaugurate the 6.5 kilometer Z-Morh Tunnel, which will make the Sonamarg town accessible from Srinagar throughout the year. Abdullah said the Z-Morh Tunnel will enable the development of Sonamarg as a winter sports destination akin to the famous Gulmarg skiing resort town. We have with us my colleague Ashik Mir joining us on the telecast. Ashik, what's when it comes to the inauguration that is set to take place, how is it looking like on the ground? पीछे जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, बिल्कुल यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर ये टनल जो है बनाया गया है, जो कि सोनमर्ग को कनेक्ट गगनगीर से करेगा। यानी गगनगीर से जो रास्ता जाता है ये सोनमर्ग की तरफ जाता है और इसके बाद जो है लेह को भी ये कनेक्ट करेगा। आज जो है प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर इस टनल की इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं और उनके साथ यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी रहेंगे। मेरे साथ इसी टनल के प्रोजेक्ट पर काम करने वाले एक इंजीनियर है जो काफी टाइम से यहाँ पर काम कर रहे हैं, यूपी से इनका ताल्लुक है। इनसे हम बात करेंगे कि कब से ये यहाँ पर काम चल रहा है और इस टनल की इंपॉर्टेंस की जहां तक बात आती है तो बार बार इसका जिक्र किया जा रहा है कि लेह को श्रीनगर से कनेक्ट करता है ये टनल, यानी एक यूनियन टेरिटरी को श्रीनगर से टनल कनेक्ट करेगा। आप मुझे बताइए कब से इस टनल पर काम चल रहा है और आज जब ये कंप्लीट हो रहा है तो कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ पर स्थानीय लोगों के लिए? इस टनल पे लगभग 2018 से काम स्टार्ट हुआ था और अभी जाके लगभग इसका सारा काम कंप्लीट हो गया है और स्थानीय लोगों को इसका बहुत फायदा होगा क्योंकि दिसंबर और जनवरी में यहाँ पे इतना बर्फ पड़ता है कि ये पूरा रास्ता बंद हो जाता है। तो जो लोकल टूरिस्ट आता है या लोकल लोग होते हैं उनको काफी दिक्कत होती है यहाँ से जाने में, लेकिन अब जैसे ही टनल चालू हो गया तो लोगों को बहुत फायदा होगा क्योंकि सीधा रास्ता बिल्कुल आपका सोनमर्ग निकलेगा जाते हैं। बिल्कुल, एक समय ऐसा भी था, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो यहाँ पर आतंकी हमला भी हुआ था। तो क्या कुछ आप उस समय यहाँ पर थे, क्या कुछ सुना था आपने, क्या कुछ देखा था आपने? नहीं, एक्चुअली मैं उस टाइम इधर नहीं था। हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट उधर रेलवे में चल रहा है, मैं उस टाइम उधर ही था, बट हमारी टीम के लोग यहाँ पे थे। तो जैसे जिस हमला हुआ था जिस दिन, तो मुझे पता लगा था तो लोगों के अंदर काफी डर माहौल था उस टाइम, बहुत ज्यादा लोग डर गए थे क्योंकि ऐसी चीजें होती है तो लोगों के अंदर थोड़ा डर बैठ हो ही जाता है। ठीक है, फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, फिरोज भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे रिया कि ये वो पहाड़ी इलाके हैं जिनको खोद कर ये टनल जो है बनाया गया है। और अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर भी इस टनल के प्रोजेक्ट पर जो काम करने वाले कर्मचारी है, जो वर्कर्स है, उनके कैंप पर जो है आतंकी हमला भी हुआ था। टेररिस्टों ने उन पर हमला भी किया था जहाँ पर 7 स्थानीय लोगों के साथ साथ नॉन लोकल्स की भी मौत वाक़ा हो गई थी। और फिलहाल जिस हिसाब से आप प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर कुछ देर के बाद इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को लेकर जो है काफी कुछ कहा जा रहा है। सोनमर्ग जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और इस सोनमर्ग को काफी ज्यादा अहम भी माना जाता है टूरिज्म लिहाज के से भी। और जिस हिसाब से कल भी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि सोनमर्ग और गुलमर्ग में हम कोई फर्क नहीं रहेगा। इसी तरह का जिस हिसाब से गुलमर्ग में स्नो एक्टिविटीज हो रही है, खेलो इंडिया के विंटर गेम्स हो रहे हैं, तो इसी तरह टूरिज्म के लिहाज से अब सोनमर्ग को भी जाना जाएगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर आम लोग भी इस टनल के खुलने से जो है राहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये एक अहम प्रोजेक्ट है जिससे यहाँ पर डेवलपमेंट भी होगी और साथ ही साथ यहाँ पर स्थानीय लोगों के लिए जो है अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज जो है वो भी कम हो जाएंगे। We also have with us Himanshu Bhatt, senior journalist, joining us on the telecast. Himanshu Bhatt, when it comes to this Z-Morh Tunnel that would be a major boost to the economy of Jammu and Kashmir, what do you think this means for Jammu and Kashmir and for regional development and accessibility? Accessibility and connectivity. See, when there is an accessibility, when there is a connectivity, there comes a local employment. The generation of local employment, generation of the sale and purchase of the local producers, if I put it very, very simply, that will be eased out. And this channel is very significant in building the infrastructure of the states which are just a little bit lagging behind than the rest of India. Because the interstate connectivity and intra-state connectivity
See, when you have a state connected by certain roadways and the railways, then what it happens is that state automatically gets connected with the other part of the country. And the report was lacking in Jammu and Kashmir because of all this terrorism problem. Now that the danger of terrorism does loom large, but that doesn't mean we should not establish the infrastructure which is first class and which is the world class. And here we are talking in terms of making Sonamarg a winter capital or a winter sports capital of the country. Now, when you are looking at that, you have to have such a facility or such infrastructure being set up in the border states too. It was sad that the previous government did not think of it. But since this government has thought of it and they are coming up with such projects, it will generate a lot of employment on the one side of the local population, and on the other side, it will give a great boost to the tourism because there will be one more center in Jammu and Kashmir where people can go and enjoy their vacation. And we already know, the footfall in Jammu and Kashmir in last couple of years have been phenomenal. And when you add such more locations for people to go and visit the beauty of nature, well, it can do wonders for the economy of the Jammu and Kashmir. We also have with us Rajan Khanna joining us on the telecast. He's an author. Rajan Khanna, when it comes to the Z-Morh Tunnel, that the inauguration is set to take place in the presence of Prime Minister Narendra Modi, Omar Abdullah and LG Saxena, what does this mean for, is it how, it's undoubtedly a game changer, but how is it exactly a game changer for tourism in Jammu and Kashmir and the prospect of development and connectivity that Himanshu Bhatt has also talked about? You see, for past 78 years, the things which were denied to the state of Jammu and Kashmir, they are being provided now. It's very heartening now because not only it will generate local population, it will attract more number of tourists. And I tell you one thing, the produce of Jammu and Kashmir, for example, apples are there, cherries are there, fruits and other things, dry fruits, kesar, our paper mache products, everything. It will, tell me one thing, how pleasing it is when you perceive something which is grown, say in Apple Valley in Kashmir or say Baramulla, Sopore, elsewhere, is taken to Kanyakumari within a span of 4 or 5 days. That seamless transportation, which is internal, as far as the intra-Bharat is concerned, then international also. When we have the access, seamless access to the ports like Kanda, Mumbai and other things, our produce from Kashmir will taken there and it will go to the Gulf and other countries within a matter of few days. So that is the entire grid which is being now conceived within Jammu and Kashmir. That grid parts now indispensable part of the national roadmap. So that is one thing. Second thing is local employment. When you have good infrastructure, besides this, say roads, tunnels, flyovers, and all that, medical infrastructure, educational infrastructure. My sisters, my brothers, my kids there in Kashmir, they will be having access to the best of the education in the world. And when you have that kind of opportunities, then you have to sit down and then you have to think the kind of bloodshed what we witnessed in the past 70 years, where it brought us, had it not happened at that time, where we would have gone, what would have been our future. So this is the point which must be contemplated, so that in future also, if some kind of people who want to play shenanigans, those who have nefarious design, they come and they want to play. Even now I keep on visiting the valley very often. Now people, they are very slowly and steadily getting disenchanted with the one word Pakistan, because they know the kind of things which are happening there. Our brothers across the LOC in past occupied, you can see, and the kind of infrastructure what we are having over here, and the total our ideological mooring.
our ideological mooring of Vasudev Kutumbakam. You might be having your own way of worship. इबादत का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन you must have pride in being Indian, in being sons and daughters of this soil, in your cultural nationalism. When you have that, there's nobody in the world which can, like I always refer, Garv Firdaus. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.